Now let's study the first type of asexual reproduction, that is fission. So general meaning of fission, that is division. Let's define it. In this mode of asexual reproduction, the parent body or parent cell get divided into parts, and each part later on develops into the new individual or new organism. अगर हम फिजन को जनरली समझें तो इसमें पेरेंट सेल डिवाइडेड होती है बहुत सारे या कुछ पार्ट्स में, और हर पार्ट फिर आगे जाके नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. दैट इज व्हाई द कॉमन नेम डिवीजन इज रिप्रेजेंट फॉर फिजन. तो अगर आप बात करें फिजन, इट जनरली टू टाइप. फर्स्ट इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, and second that is called multiple fission. So precisely fission, it is categorized into two types. Now what is binary fission and multiple fission? Let's study about both of the types. बायोलॉजी में जब भी आप डेफिनेशन फॉर्म करना चाहते हैं, अगर आपके पास वर्ड मीनिंग है, सो यू कैन इजीली फॉर्म द डेफिनेशन. हियर बाई मीन्स टू, एंड फिजन इटसेल्फ डिवीजन. सो डिवीजन इन टू पार्ट्स. द जनरल मीनिंग कैन बी डिराइव्ड एज इन दिस मैनर. सो व्हाट काइंड ऑफ डेफिनेशन वी कैन फॉर्म? सेम सिग्नेचर लाइन. बाइनरी फिजन किसका टाइप है? फिजन का. तो हमारी फर्स्ट सिग्नेचर लाइन कैसे स्टार्ट होगी? In this type of fission, in this mode of fission. So in this mode of fission, the parent body or parent cell get divided into two parts, and later on each part is developed or produces new offspring. यहाँ पर जो parent cell है, अगर हम examples देखें तो binary fission can be seen in amoeba, paramecium, euglena, even in bacteria. So first of all, I am drawing the diagram to make you understand better. In the amoeba, the binary fission and multiple fission both can be seen. So I am here drawing the diagram of amoeba, but explaining the binary fission. Amoeba हम जानते हैं, that is unicellular organism. It contain nucleus, and the nucleus type is karyotic nucleus, because protozoans, they are belong in eukaryotic cell, right? They are the eukaryotic cell possessing organism. So eukaryotic nucleus can be seen into the amoeba, and here some of the food vacuoles also can be seen in the body of amoeba. Amoeba, that is unicellular, वो सिर्फ एक सेल का बना होता है. So I'm just drawing the diagram of amoeba in simple manner, but I'm going to give you the labeling so that you can understand better. This is the cell membrane of amoeba. That is nucleus, right? As I was telling you, it is nucleus. These are the food vacuoles. One more vacuole I'm going to draw here. और ये जो food vacuole होते हैं, ये कैसे बनते हैं? When amoeba engulf any food particle, है ना? हमने पढ़ा है amoeba pseudopodia, ये जो उसके false feet हैं, जो प्रोजेक्शंस बनते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन में, सूडोपोडिया. उस सूडोपोडिया की हेल्प से जब एनगल्फ करता है, इंजेक्शन करता है अपने फूड पार्टिकल का, तो जो फूड पार्टिकल है बेटा, जिसको अमीबा कैप्चर करता है, इट इज नाउ केम इनसाइड एज अ फूड पार्टिकल, एंड आफ्टर द टाइम पीरियड दिस फूड पार्टिकल दे गेट डाइजेस्टेड. तो धीरे धीरे ये जो फूड वैक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व होता रहता है, और फूड पार्ट जो है, फूड जो एज अ फूड वैक्यूल यहां पर था, इट इज डिसॉल्व इनटू द साइटोप्लाज्म. वो पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो जाता है. सो दीज फूड वैक्यूल्स कैन बी सीन इनटू amoeba. These are the food vacuoles, and these are the pseudopodia, as I am telling you. Pseudopodia, false feet of amoeba. Pseudo means look like or false. Pseudo, false. Podia means feet. So pseudopodia, they look like feet, but they are not the feet of amoeba. So that is why the name given as pseudopodia, Latin language.
So this is the general parent cell. It is a parent amoeba. We must write here, this is parent amoeba. And this parent amoeba, when it is taking the binary division, so it is generally start the division of nucleus inside it. First of all, nucleus जो है वो divide होना शुरू होता है like this. इस तरह से nucleus जो है it is starting the division. First of all, nucleus starting the division, and after some time here the two separate nucleus got formed. The two separate nucleus there are got formed here. And once the two nucleus got formed, that means the division of nucleus, once it get done, so then this cell membrane, it is starting the division and it is forming a furrow. एक notch यहाँ बनना शुरू होती है जिसको मैं यहाँ आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ. In that form a notch is getting formed. आप देख सकते हैं इस तरह से एक notch इस तरह से बेटा form होना शुरू होती है. Because now the cytoplasm also taking division, and this notch it progress continuously and that is become very prominent, बहुत डेप्थ में बनती जाती है. ये देखिए इस तरह से नॉच बनती जा रही है. Are you getting? And after some time when this notch is going to be regular, it is end up with the separation. ये इस तरह से it got separation. So there two amoeba got formed. और यही तो है binary fission by 2. So in this mode of fission, the parent body get divided into two parts, and later on this part develops or form new organisms. तो अब यहाँ जो one single parent थी, one single amoeba parent cell, now it turned into two amoeba cells. So everything the similar here. यहाँ food vacuoles भी हो सकते हैं, cytoplasm तो obviously होगा यहाँ. So that the two amoeba got formed. आप देख सकते हैं यहाँ क्या बन गए हैं, two daughter amoeba cells. So here you can see this is the binary fission, and generally it can be seen in protozoans as well as lower group of organism. बैक्टीरिया में भी ये बाइनरी फिजन देखने को मिलता है. अमीबा के अलावा पैरामीशियम, यूग्लिना, they also shows the asexual mode of binary fission. Okay, so I hope now you understand better about the binary fission.